चलिए जी, let me share my screen. राबिया, आपने मुझे रिमाइंड करवाना है, मैंने आपके साथ पिछले वीक के लेसन शेयर करने हैं प्लीज, मुझे अभी याद आया that inshallah if you haven't done the previous week, that should not be an issue for today's lesson because that's technically a separate topic inshallah. चले जी, so थोड़ा सा आज काम हमारा इस तरह का है कि I thought it was appropriate that I do our lesson today with lots and lots of pictures. The ideas that we are going to discuss today are very simple. Honestly, nothing very biological all about what we're going to discuss today. बहुत simple, basic सी चीज़ है. Very interesting. So please pay attention, inshallah. I'm sure you will enjoy this. This is actually not very boring and dry. This is very interesting. और काफी मजे का मामला होता है. अच्छा जी, so the next thing that we are going to look at is actually a transition into the next subtopic, which is classification. Okay, लेकिन classifications किसी भी चीज को classify करने से पहले, if you want to classify anything, you will actually have to study all of that what you want to classify. ठीक है, मतलब as simple as that. So what we do is, अगर यानी कि for example, अगर मैं आपको कहता हूँ कि you are standing किसी भी आप पार्क ले लेना, अपना रेस कोर्स पार्क ले लें, कोई भी पार्क ले लें लाहौर का, और मैं आपको कहता हूँ कि जी आपने बायोडाइवर्सिटी कैलकुलेट करनी है. I know we use Simpson's index of biodiversity to calculate all of that, but I mean, generally speaking, so what you will do is, one of the very easy way is that you would simply start counting. Okay, counting the number of organisms. Okay, that's a very general way. और biodiversity की terminology में उसको हम कहते हैं census. So census is just gathering the number of any particular organism या all of the organisms. ठीक है? लेकिन this is impractical. You can't. I mean, आप एक पार्क में खड़े हैं और मैं आपको कहता हूँ जी count every tree. So I mean, maybe tree will be somewhat possible, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि take example of any organism, let's say plants के अलावा भी लेने, I mean कोई insect ही लेने चले, I mean it's virtually impossible to count the number of that. So census is okay when it comes to understanding it as an idea, लेकिन practical implication of literally counting all of the number of organisms is not feasible. So we don't do that. What we do is sampling. Okay. अच्छा, और sampling का concept क्या है, philosophy क्या है, idea क्या है, वो तो चले मैं आपको बताता हूँ, लेकिन there are two types of sampling that we are going to look at. The first type is known as random sampling. ठीक है, इसमें कौन कौन सी types हैं, क्या detail है, उसकी भी हम बात करते हैं. And then the second form of sampling that we will see in detail is known as systemic sampling. Not systematic sampling, but systemic sampling. आपको अगर याद हो तो आपने O levels में वो, बल्कि O levels में नहीं, AS में भी systemic circulation, sorry मैंने उल्टा बोल दिया है. This is systematic sampling, not systemic, systematic sampling. Okay जी. But before I go into details of all of this, we need to understand the general idea of what sampling is all about. Why do we do sampling? Well, we do sampling because sample का क्या मतलब होता है वैसे, by the way? If I were to ask you this question, क्या ख्याल है? Khatija and Rabia, if anybody would like to tell me, what exactly do you think is sampling? कभी आप लोगों ने देग बनवाई है? You know what देग is, right? चलें, for example, अगर आप चिकन कढ़ाई की देग बनवाते हैं, हाँ जी, आप माशाल्लाह both of you are Lahoris. So a typical देग of chicken कढ़ाई is around 10 kgs वाली भी होती है, लेकिन वो आइडियल जो है ना वो 20 kgs वाली होती है. तो सोचें कि आप जो है एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करवा रही हैं, एंड the sample, the chicken kadai that you're making is 20 kgs. Now, for example, if the chicken kadai is ready and you need to check it
What do you do? बताएं जरा मुझे, शाबाश, माइक शाइक अनम्यूट करके बताएं क्या करेंगे आप? सर टेस्ट करेंगे। हाँ, टेस्ट करेंगे, और मेरे जैसा कोई होगा तो शायद वो एक आधा लेग पीस भी निकलवा लेगा. Okay, so what I will do is, I mean, imagine if that's the dig, so that's how it looks like. Okay, so what I'll do is I'll take out sort of a leg piece. I hope leg piece looks like this. यानी कि the point is मैं अपनी प्लेट में थोड़ा सा डालूंगा, and then what I will do is I will assume, now listen carefully, this is very important, that the taste of my quote unquote sample is going to be of the same taste. Sorry, a second, let me write that down. Of the same taste as the rest of the dig. Rest of the dig. Do you agree to this? क्या ख्याल है बच्चों? ऐसे ही करते हैं ना, थोड़ी सी चक्की जी नमक मिर्च बिल्कुल ठीक है, और हम अज्यूम कर लेते हैं that the namak mirch or whatever the case is will be the same for that. So that's the idea of sampling. So if I'm standing in a habitat which virtually makes it impossible for me to count the number of organisms, yeah, whatever the case is, I mean, I resort to sampling. I take a portion of the habitat that I want to study, randomly, yeah, without bias, I will select some portions, I will study, and then I will assume that the rest has the same. So that's the vague idea, if you like, what sampling is all about. Okay, now coming to the types of sampling, there are two types of sampling. एक को हम कहते हैं random sampling, and the other, as you can see, is systematic. I'm not going to talk about systemic first, I'm going to talk about random sampling first. And the first thing that we need to understand in a random sampling is something that is known as a quadret. ठीक है, quadret क्या होता है? Quadret इस चीज को कहते हैं, ये देखें जरा, that's a quadret. एक स्क्वायर सी चीज होती है, इसका साइज छोटा भी हो सकता है, 10 by 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 100 by 100 सेंटीमीटर भी हो सकता है, it depends. So what we do is, now I want you to look at this picture that you have on the screen. So for example, ये आपने एक this is a picture basically of a habitat, for example meadowland. Okay, आपने एक पिक्चर ली है या कंप्यूटर नेट से कोई पिक्चर पकड़ी है आपने उस habitat की, the habitat that you want to study. ठीक है, क्या स्टडी करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ. So what you did was so you inserted this picture in your computer, and using a software you basically, या simply आपने उसको किसी भी वर्ड फाइल में किसी में भी रख के इस पिक्चर को you basically marked out with grid lines along the two edges. I mean, simply you have a picture, और उस यानी कि for example अगर ये मेरी एक पिक्चर है, कोई भी random पिक्चर है, तो मैंने उसके ऊपर, आपको पता है, when I can put it on the system and I can literally make lines on it like this, and I can make lines on it like this. Okay, so that's exactly what I've done. And then what I do is I use maybe a software to randomly generate coordinates. बच्चों coordinates किसको कहते हैं? थोड़ी सी मैथ्स हमें पढ़नी पड़ेगी. अगर यहाँ पे x axis पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, and on the y axis you have 1 2 3 4. तो x y coordinate अगर मैं आपको कहता हूँ 1 and 4 है for example, तो इसका क्या मतलब होगा? 1 on x axis and 4 on y axis. That's my point. So when I'm using this coordinate, these coordinates to figure out the point on my axis. Okay, so you will randomly generate these coordinates. The question is, why am I, ये जो आप crosses देख रहे हैं, ये crosses are randomly generated coordinates. Okay, and of course you have different softwares that you can do this. You guys don't need to know the names of the softwares and those details. Sort of from the examination perspective, you just have to give an idea that now since we have technology, so instead of आप randomly जो है वो खुद select करें, you can always use the computer generated system or whatever the case is, the software, to generate these coordinates. Okay, now
why am I using maybe a computer software? मैं खुद क्यों नहीं कर रहा? What am I trying to avoid? Who will tell me? To avoid what? Why am I using computer software? मैं manually क्यों नहीं कर रहा? Why not manual? Because human error ना हो जाए. ह्यूमन एरर भी आ जाएगा और इस केस में आई वांट टू अवॉइड बायसनेस. मेरे जैसा सुस्त बंदा होगा तो वो कहेगा यार इधर ही खड़े हैं, इधर ही इसी पोर्शन को पकड़ लेते हैं, क्या उधर तक चल के जाएं. आई मीन फॉर एग्जांपल, ओके. सो द पॉइंट इज दैट यू वांट टू अवॉइड द बायस and you want the sample, listen carefully to the sentence that I'm saying, you want the sample to be representative of the entire habitat, the way my leg piece was representative of the entire day. Okay, so to avoid bias, to make the sample representative of the entire habitat. ठीक है जी. तो वो यूज करके फिर जहां पे कोऑर्डिनेट्स हैं वहां पे बारी बारी ये देखो एरो जा रहा है, वहां पे बारी बारी ये ग्रिड ये रखते जाएं और फिर ऑर्गेनिजम्स को या तो काउंट करें या क्या करें, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं ये ग्रिड रख के. ओके, ये यू कैन सी दीज वर्ड्स डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, कवर और अबंडेंस. आई विल टॉक अबाउट दिस. Just ignore this fourth point for a while. The only reason I'm showing you this slide is just to make you understand how we are actually using coordinates to study. ठीक है, हम coordinates को हम basically हम एक habitat की picture को randomly उसमें से points कैसे select कर रहे हैं and what's the purpose of doing it randomly to avoid bias. Now, coming to the next picture, look at this picture. This is a real picture of two investigators. ये देखें उन्होंने कोऑर्डिनेट रखा हुआ है. ये कपड़े का कोऑर्डिनेट रखा हुआ है. कपड़े का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है. I mean, it can be different types, so that doesn't make any difference. Now, we have to understand, now there are few important terminologies in green box. उसकी तरफ मैं आता हूँ, लेकिन let's look at the points in the yellow box, okay? Now, for the use of coordinates, we need to make sure that they are positioned at random within the habitat being investigated. Okay, and we understand the rationale for this. We've discussed this earlier. That's number one. Number two, different species present are then identified. Okay, क्या मतलब identified? I mean, either we can have something with us already जिसके साथ reconcile करके, यानी कि for example, अगर मेरे पास एक list है, I have pictures and names of insects, and then I'm looking at my coordinate, and then I'm reconciling. अच्छा ये वो है, so maybe I'm counting. Or that's very difficult. What you simply do is आप जो है letters assign कर देते हैं, pictures खींच के different insects की, this is A, this is B, this is C, and then later you can reconcile. I mean, there are many ways we can do that, but again, इस वक्त मेरा उस पे focus नहीं है. Identification, counting भी हो सकती है, उनका percentage cover भी हो सकता है. What is percentage cover? I will talk about this in detail. Don't just worry about that. Let's look at the third bullet point first. Then I will go through this green box, and then I will come back again to second point. It will inshallah make more sense. Now, देखिए density का क्या मतलब है? Density of any organism in my quadrat. What does that mean? Let me repeat, listen carefully. Density of an organism, what does that mean to me in my quadrat? That means mean numbers of individuals of each species per unit area. ठीक है? So number of or individuals per unit area जो है, that is the idea of density of organisms. यानी कि मैं कहता हूँ कि I want to calculate the density. So I do it number of organisms per unit area. That's number one. Frequency is very simple. फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि कौन सा इंसेक्ट, फॉर एग्जांपल कॉकरोच है, कॉकरोच कितनी दफा आ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स डज इट अकर, नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स इन व्हिच इट द स्पीशीज अकर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज. यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने आई थ्री यू 3 क्वाड्रेट्स, फॉर एग्जांपल इसमें 3 कॉकरोच आए, इसमें 5 आए और इसमें 7 आए. सो दिस 3, दिस 5 एंड दिस 7 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉकरोचेस, फॉर एग्जांपल. ओके, परसेंटेज कवर. देखिए कॉकरोच के आइडिया में तो हम नंबर्स को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन देयर कैन बी इंस्टेंसेस लाइक फॉर एग्जांपल लुक एट दिस डायग्राम, लुक एट दिस पर्टिकुलर प्लांट. आई मीन
ये तो मेरे यानी कि अगर मैं if I'm considering the following quadrants, it's actually falling on not this, wait, uh, this and this 1 2 3 4 5 6 7 8 quadrants में ये एक plant आ रहा है. So I mean I can't work with the frequency of this plant. I mean it doesn't make sense. So for such plants which are actually covering the entire area, उनके लिए हम we use this idea of cover, percentage cover of ground covered by a species. ठीक है, ये यूजफुल होता है when it is not possible to identify separate individuals, okay, like the example that I gave earlier. And then abundance is basically abundance हम कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ subjective assessment of species present. They basically used it's relative abundance. We've talked about this. As in that's the how many times does it occur. Frequency and abundance are interrelated ideas, but the point is जो main चीज है वो आपको यहाँ पे जो समझने वाली है वो परसेंटेज कवर की है. अच्छा, परसेंटेज कवर, आई मीन इट्स इजी फॉर मी टू टेल द फ्रीक्वेंसी. मैंने आपको कॉकरोच की एग्जांपल दे दी है कि जी फ्रीक्वेंसी इनकी एक में 3 है, एक में 5 है, एक में 7 है. लेकिन द पॉइंट इज व्हाट अबाउट द परसेंटेज कवर. उसके लिए एक सेपरेट फॉर्मूला है, दैट इज द Braun-Blanquet cover scale. You don't need to remember this. You just need to understand what this is. And inshallah, this is very simple. I just want you to pay attention. देखिए, it's a standard scale that has been made, जिसके साथ reconcile किया जाता है. So for example, at number 1, if there are very few plants, their percentage cover is less than 1%, तो फिर उसकी value क्या होगी? So I'm sorry, this is number 1. Many plants, but the cover is 1 to 5%. So if the plants are covering 1 to 5% of my quadrant, then the value I will give for percentage cover is +1. ठीक है, अब ये +1 हम क्यों दे रहे हैं? It's a statistical derivation that has been made in which we don't need to go into details of. What you need to remember is that this is a set standard table used as a reference to give quantitative numbers to the idea of percentage cover. यानी कि इस डायग्राम में देखें, अब मैं आपको क्या देख के बताऊं कि ये जो मैंने प्लांट की एग्जांपल दी है इसका परसेंटेज कवर क्या है. आई मीन हाउ डू आई क्वांटिफाई इट इन नंबर्स? मैं क्या कहूं कि एक में ज्यादा है, एक में कम है? आई मीन आई कांट डू दैट. आई हैव टू गिव इट क्वांटिटेटिव नंबर्स. So for that we have this particular scale, which is Braun-Blanquet cover scale. And again, you don't even need to remember these values. ये आपको दिया होगा. So I just need to understand how this is understood. If there are very many plants or cover is 6, यानी कि अगर cover की percentage इतनी है तो उसकी value 2 होगी. If the cover is 26 to 50%, then the value is +3. If it is 50 to 75, then it is +4. And if it is greater than 75, +5. मुझे आप ये बताएं, I want you to look at this picture. This picture, ये जो मैंने एग्जाम्पल दी है, मुझे बताएं कि जिस क्वाड्रेंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो, ठीक है, उसमें Braun-Blanquet स्केल के हिसाब से क्या वैल्यू होनी चाहिए? क्या ख्याल है? Do you want me to go back to the picture? Look at the picture once again. Look at the picture once again. So this box that I have highlighted with yellow, और मैं उसको ऑरेंज कलर से आउटलाइन भी कर रहा हूँ. इसमें इस प्लांट की जो परसेंटेज कवर है, do you think it is more than 75%? I mean, what do you think will be the value? 5 होगी, exactly, because आप clearly देख रहे हैं वो परसेंटेज जो है कवर उसका ज्यादा है. So that's why we need this Braun-Blanquet. Again, it's the same picture. ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं काम करते हुए. Okay, whatever the case is. And again, that's a picture from your textbook. You can clearly see कि random sampling में ये coordinates are positioned randomly in an area marked off by measuring tapes. आप देसी तरीका भी कर सकते हैं, इतना लंबा टेपें शेपें लगाएं, सारा करें, या फिर आप हैबिटेट की ड्रोन से पिक्चर लेके, अब तो ड्रोन्स का जमाना भी आ गया, आप ड्रोन से पिक्चर लेके उसको अपने सिस्टम में इंसर्ट करें और एक सॉफ्टवेयर उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स बना देगा और वो आपके लिए पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर देगा. एंड यू कैन डू दैट इन दैट वे आल्सो. I mean, it's just, but again, marking schemes में आप देखेंगे, आप
इसी चीज को वो एक्सेप्टेड करता है कि you use quadrates and use random generating numbers. Okay, all right. So that being said, now I mean I know you've understood that this is an idea. Exam में कैसे आएगा? चले आए देखते हैं, question देखते हैं. Very simple questions. I mean you will be surprised, honestly. Look at this. ये है जी मई जून 2020, ये कोविड में आया है जी, जो किसी ने नहीं दिया. आई मीन दिस इज फ्रॉम द वेरी रीसेंट पेपर. वेल वेरी रीसेंट तो अक्टूबर नवंबर के होंगे, लेकिन बहरहाल let's look at this question together. It says sampling is used to find out the variety of species in an ecosystem and the size of population of each species. Okay, read this line again. This is also telling you something very important about sampling itself. Okay, sampling is used to find out the number one, variety of species in an ecosystem, and number two, the size of the population. Okay, a student was carried out to investigate a study was carried out to investigate the biodiversity of two fields. ठीक है जी, A एक field है और अल्लाह आपका भला करे जी B आपकी एक field है. Field A has not been used for growing crops for 10 years. ठीक है, यहाँ पे for 10 years no crops have been grown. Field B had been used for growing crops until 1 year before the study. Random sampling was carried out. ठीक है, अभी हमने systematic को नहीं देखा, अभी हम random sampling ही देख रहे हैं. ठीक है जी, describe how random sampling could be carried out on plant species in the two fields. जो मैंने आपको ऊपर सारा explain किया है, quadrate लें, उसको फेंकें, या पहले picture लें, उसके quadrates बनाएं और वो सारा करें. Let's look at the very simple mark scheme that you have. कितने marks का question है बच्चों? 4 marks का question है. So जो आपने notes लेने हैं अपने random sampling के, वो आपने कहाँ से लेने हैं? इधर mark scheme से लेने हैं. Look at this, look at these points. Very simple, very basic. All of what I explained is written here in theory. So it says reference to use of quadrates. So you use quadrates. Reference to size of quadrate, मैंने आपको बताया quadrate छोटा भी हो सकता है, quadrate बड़ा भी हो सकता है. Depends on the area that you're measuring. I mean अगर आप अपने घर के lawn में sampling कर रहे हैं, then of course you won't need a very big quadrate. Okay, it can be of different sizes. Then grid is marked out. ठीक है, grid is marked out. उसके बाद use of random number generator. ठीक है, mark scheme में भी देखें, he is endorsing the idea of random number generator. I mean honestly, in this day and age, you won't expect people literally manually doing counting and picking and choosing. And the reason you're manually randomly number generator आप use करें, that is basically to avoid bias, as I discussed earlier. Okay, that is basically to avoid bias. फिर you measure the species frequency. Species frequency का क्या मतलब है? तो मैंने आपको cockroach वाली example दी थी. For example, if you've thrown 3 quadrates, in the first you find 3 cockroaches, in the fifth you find, in the second you find 5, and in the third you maybe find 7. That's the frequency. ठीक है? या फिर you can also use key or Braun blanket, क्योंकि हो सकता है कि there are organisms which you can't count, so you use Braun blanket scales. There are other scales also that can be used. आपको सारों का पता होना जरूरी नहीं है. Only the Braun blanket scale inshallah should do. Yes, there are many other, but we don't need to go into that details. हमारा syllabus जो है वो इस पे तसल्ली कर लेता है. Measure species abundance and percentage cover. How do you calculate the species abundance? How do you calculate the species percentage cover? Measure, आपको पता है percentage cover आपको measure करने की जरूरत नहीं है. You have the Braun blanket scale. That's basically how you can do it. Or abundance is again, it's basically simply counting, so it's no rocket science. Okay, the next thing that you can see is repeat sampling. हाँ जी, हम repeat क्यों करते हैं? To make the results reliable. ठीक है? And then both sides treated the same, of course, to avoid bias. So this is basically how you would do the simple sampling. Okay, let me show you a very अच्छा ये है जी belt transact. चलें इसकी तरफ हम बाद में आते हैं. Wait. Yes, again,
मार्च 2020 में भी बच्चों देखें वही क्वेश्चन आया है जो कि उसने मई जून 2020 में भी पूछ लिया है. तो दिस ब्रेक्स द आइडिया दैट स्टूडेंट्स यूजुअली हैव कि जी पिछले एग्जाम में तो ये चीज असेस हो गई थी, अब तो ये असेस नहीं हो सकती. अगेन लुक एट द क्वेश्चन. This is March 2020. Describe how random sampling can be used to assess the distribution and the abundance of plants in an area. Area marked out as a grid, coordinates obtained using random number generator, quadrates used, placed at random coordinates, reference to size of quadrate, species identified within the quadrate. या तो percentage cover करें या number count कर लें, ठीक है. परसेंटेज कवर के लिए आप ब्राउन ब्लैंकेट का उसको बताएं. रिपीट सैम्पलिंग या एनी अदर वैलिड पॉइंट के लार्ज सैंपल साइज हो, मीन्स कैलकुलेट करें या मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अबंडेंस एंड रिचनेस. ओके, एनी अदर वैलिड पॉइंट. वी डिड टॉक अबाउट अबंडेंस एंड रिचनेस इन आवर लास्ट क्लास. ओके, अच्छा जी. सो बच्चों, इज दैट क्लियर? डज दैट क्लैरिफाई? राबिया एंड आज दो ही बच्चे आए हैं, राबिया एंड खदीजा. यस, Yes, sir. इजी है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है. चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज गुड. ऑलराइट, लेट्स कम बैक. सो हमने रैंडम सैम्पलिंग में एक मेथड देख लिया कोऑर्डिनेट्स का. एक और मेथड है, उसको कहते हैं MRR, व्हिच मींस मार्क, रिलीज एंड रीकैप्चर. वेरी इंटरेस्टिंग. क्या मतलब? मैं आपको एक पिक्चर से एक्सप्लेन करता हूँ. लेट मी यूज दिस पिक्चर. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. दिस आइडिया इज वेरी इंटरेस्टिंग. लुक एट दिस पिक्चर. सबसे पहले ये ग्राफ, ये लेफ्ट साइड वाली पिक्चर को आप इग्नोर करें, ग्राफ्स वाली, एंड जस्ट आई जस्ट वांट यू टू लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर. चलें जी, आई थिंक आधा घंटा हो गया है. माय ट्रेडिशनल 1 minute ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. तो जाएं, जरा लेजी पेजी मत बने, उठें, get go and get yourself a glass of water, get up and stretch and then come back. I'm ending the session. I will exactly start it after a minute. It's 7:30. I will begin around 7:31ish. Rejoin, please.